तुम मत देखो कैमरे तरफ, सीधी बैठो पीछे की तरफ, अच्छी बैठो, सीधी बैठो। नहीं यस कैन गो लाइव। Hello and good evening, everyone. Namaskar. I am Dr. Preeti Singh. I am a practicing pediatrician in Gurgaon. I am having about 12 years of experience in the field of newborn and child care. And at present, I am managing my own center, Swas Child and Cardiac Care, which is put up in Sushant Lukwan, Gurgaon. I am very happy in my association with BabyChakra, one of the premier parenting and maternal care app, and I am happy that in this way I'll be able to sort out your problems. So today I am going to speak about health of children. Children are the apple of eyes of everyone in the family. They are like buds of flowers which need all the care, love, affection, nourishment. And if anything is not in place for them at this stage, it may lead to long term consequences, sometimes irreversible damage to them. In the current times, as people are becoming more and more conscious about their health, and everyone in the family is concerned about their building their immunity, taking care of the health, growing well, stay disease free. But as we all know, as and always, and the children are always the primary concern of each and every member of the family. So, health as it is a very broad topic. It includes two major aspects if we discuss it. First is the physical well-being, and second is the mental and associated social behavior or well-being of a child. So, physical well-being is something which we see or which is usually the matter of presentation to a doctor, such as मेरे बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता, ये हाइट गेन करेगा या नहीं करेगा, ये सिर्फ मैगी खाता है, खाने में बहुत नखरा करता है. So that is one of the things of the physical health that we'll be discussing shortly. So physical health, if we say, can be discussed in two major things. First is the growth and development. हमें ये समझने की जरूरत है कि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक प्रोसेस है. ये बेसिकली तब शुरू हो जाता है जैसे ही माँ बच्चे को अपने गर्भ में कंसीव करती है. So the foundation for proper growth is basically laid when the baby is in maternal womb, or a healthy mother or healthy maternal environment is the most important foundation step in the baby's growth. Apart from that, there are multiple factors which work in combination, such as proper nutrition. Proper nutrition, like if the baby is in the first 6 months of life, he or she should be given just breast milk and no other liquid, not even water. Then there should be timely introduction of complementary food, which is basically food in addition to the breast milk at 6 months of age. Moving on to gradually taking the baby off the breast milk and shifting to a healthy, nutritive, balanced diet plan. Right? And this is one aspect, the nutrition part. The second and the other factors which play a major role in the growth and development of a child
is the genetics of the family, how your family line is, effect of the environment, then role of hormones, which is also very important, such as growth hormone, thyroid, insulin, sex hormones when your child is approaching adolescence, and other things. And all these work in an interplay. ये आपस में जोड़ के काम करते हैं जिससे कि बच्चा ठीक से ग्रो कर सके, जिसे हम कहते हैं ठीक से वजन गेन कर सके, अच्छी हाइट अटेन कर सके, अपना जो है समय से बोल सके, समय से चल सके, और अपना एक हेल्दी तरीके से ग्रो करे। समझने की बात ये है कि बोथ अंडर न्यूट्रिशन and tendency towards overweight and obesity both are harmful। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर चबी है या गब्दू है या बहुत ज्यादा गोलू मोलू है तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैंने बहुत बार पेरेंट्स को इस चीज को लेके कंप्लेन करते देखा है कि हमारा बच्चा चबी नहीं है इन अ वेरी वेल एक्टिव चाइल्ड हु इज अदरवाइज इन द नॉर्मल रेंज। अच्छा, तो अब ये पता कैसे चलेगा, हाउ विल वी नो कि बच्चा जो है इज इन द नॉर्मल ग्रोथ रेंज, ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, समय से जो है उसकी सारी चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है when you visit your doctor for the routine immunizations या routine health check या at frequent intervals, basically immunization एक ऐसा टाइम होता है जब आप डॉक्टर के पास रेगुलरली जाते हैं। उस टाइम पे एक बड़ा अच्छा मेथड है ग्रोथ को असेस करने का, विच इज द ग्रोथ चार्ट। तो ग्रोथ चार्ट इज समथिंग which gives you an idea how your child is growing. It is a simple, cheap and effective way। जो आपके बच्चे की उस टाइम पे पैरामीटर्स होते हैं, वेट हो गया, हाइट हो गया, उसका बीएमआई हो गया, उसकी हेड साइज हो गई, तो डॉक्टर उसको मेजर करके एंड ही विल शो यू ऑन द प्लॉट कि ये भाई नॉर्मल रेंज में जा रहा है। सपोजिटली कि वो डेंजर लाइन के या तो बहुत नीचे है या जो हमारी अपर एंड है जिसमें हमारा एक्सेसिव वेट गेन वाला आता है, तो देन देयर इज समथिंग दैट नीड्स मेडिकल अटेंशन, राइट? So this is the physical aspect, or as you can say ki we are talking about the weight, height and the head size or the other growth developmental parameters। Moving on, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न एक पेरेंट की होती है विच इज कि मेरे बच्चे को बीमारी ना लगे, माई चाइल्ड शुड बी फ्री ऑफ डिजीजेस। बीमार पड़े तो जितना कम से कम बीमार पड़े, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होता है वो माँ या पेरेंट होता है, और उसको ये लगता है कि किसी तरीके से मेरे बच्चे को बीमारी ना पकड़े। तो हम देखिए प्रिवेंशन के लिए, बीमारी के लिए व्हाट वी कैन डू इज देयर आर फ्यू सिंपल थिंग्स। फर्स्ट इज अगेन मोस्ट important thing is a nutritive diet। So your diet should be well balanced, should be rich in every component, be it carbohydrates, proteins, good fats, should have minerals, vitamins and fibers। Then you should be taking the health supplements like vitamin D, iron or multivitamin as advised by your doctor। Thirdly, you should go for time to time and updated immunization of your child। So immunization is one important thing which can prevent these vaccine preventable diseases। और अगर मान लीजिए इम्यूनाइजेशन के बाद बच्चे को वो बीमारी होती है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती, तो अगर उसको वो बीमारी होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज वेरी लेस। मतलब उसकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू एन अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड, उसकी इंटेंसिटी, उससे रिकवरी जो है वो अच्छी होती है। And nowadays the hot topic of hand washing, so we can say it is like a blessing in disguise। Everyone, be it celebrities, be it sports person, be it their favorite cartoon characters like Chota Bheem and Doraemon, everyone is talking about hand washing। So I may say this is the best time that you can inculcate this technique of hand washing। Basically 10-20 से 30 सेकेंड, every 20 to 30 seconds hand washing, proper hand washing before and after their meals, after they visit the toilet, then when they are coming from outside, when their hands are soiled। So these are the things which can prevent
diseases for quite some time, or they can reduce the incidence. इनसे बीमारियों की frequency बहुत कम हो जाती है. अगर इसके बावजूद आपका बच्चा बीमार हो रहा है, जो कि अनअवॉइडेबल है, हम और आप भी अपनी एज में बीमार हुए हैं, तो उस टाइम पे मेरी सलाह ये है कि कभी भी सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश ना करें. नेवर गिव मेडिसिन ऑन योर ओन विदाउट सीकिंग द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर, बिकॉज बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं. देयर बॉडीज रिएक्ट वेरी रैपिडली टू एन इनअप्रोप्रिएट डोज और एन इनअप्रोप्रिएट medicine. And thirdly, avoid unnecessary use of antibiotics, which is very important, right? And all these in combination with good physical exercise for about 30 to 45 minutes every day, be it outdoor activities like cycling, running, playing, aajkal thoda sa restricted hai, or indoor activities like jumping in the room or doing skipping. All these things help in keeping the body of a child healthy. Again, moving on to the physical aspect, we'll talk about the care of skin, care of eyes, care of ears, good orodental hygiene. देखिए, अच्छी स्किन के लिए the most important thing is that you should use the products which are friendly to your baby's skin. Then in case you have any family history, अगर आपकी फैमिली में कोई एलर्जी की हिस्ट्री है या आप किसी प्रोडक्ट से सेंसिटिव हैं, so try and avoid and look up into the ingredients of the product that you are using. Try and give bath to your baby regularly. बेबी और यंगर चाइल्ड, बेबीज के लिए कुछ अलग वो होते हैं कि शुरुआत में नहीं नहलाना होता है और फिर मौसम के हिसाब से नहलाना होता है. Then you can give massages. Newborns में तो should be given on a daily basis before bathing, and younger children में आप you can give it on a weekly or a fortnightly basis. हर 15 दिन में आप मसाज दे सकते हैं. Care of eyes is actually very important in today's times, क्योंकि हमारे बच्चे due to unavoidable circumstances they are being exposed to increased screen time, especially the school going kids. So what you can do is you can advise them to wash eyes frequently, keep a distance of about 45 to 60 centimeters between the screen and the child. कोशिश करें कि लैपटॉप्स पे क्लासेस अटेंड करवाएं instead of mobiles or tablets. Then do eye relaxation exercises with them so that there is less fatigue. And ask them to touch the eyes less frequently with the hand. बच्चे क्या करते हैं, लैपटॉप छुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों को छू लिया, और लैपटॉप में जो डस्ट और इन्फेक्शन के एजेंट्स हैं उससे बच्चों में आजकल स्टाई और आई इन्फेक्शन के इंसिडेंसेस काफी ज्यादा हैं. For ear care, what you should do is avoid putting the earbuds. Earbuds ना डालें. वैक्स डिसॉल्विंग मेडिसिन का यूज करें, और बच्चे को लेटे हुए पोजीशन में फ्लैट बेड पे ना कभी भी दूध पिलाएं. तो आप जब लेटे हुए व्हेन यू फीड योर बेबी इन अ लाइंग डाउन पोजीशन, क्या होता है कि मिल्क जो है वो कान के अंदर चला जाता है और उससे ईयर इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ सकता है बच्चों में. देन वी कम टू द डेंटल केयर. तो when the baby is turning around 4-5 months, 6 months, you can start off with the gum massages. This would ease the process of teething. दांत आने में आराम हो जाएगा. And then switch on to brushing their teeth twice a day with age-appropriate low fluoride or no fluoride toothpaste, right? And for young active children, you should be doing deworming on a regular basis every 6 months, right? So this is basically the physical aspect of the health which I wanted to discuss with you. Moving on, an important and the hot topic of the current scenario is the mental and the psychosocial health. Aajkal we are talking about anxiety, depression, suicidal thoughts, feeling of separation and isolation. But what we are not understanding is our kids are experiencing the same. And some of them are so young that the only way that they can express is by either showing excessive temper tantrums or not listening to you or banging of their heads or starting eating the soil or the paint from the wall. Social isolation, lockdown, no school for past 5 months, minimal interaction with their friends. So something that they hadn't experienced till now, right? So talk to them. Share their anxieties and insecurities.
play with them, jump with them, do all the nonsensical activities that you may think are foolish or silly, and you may realize that how relaxed you feel after those. Try and give an uninterrupted attention of about 30 to 45 minutes every day to your child. By uninterrupted attention, I mean कि अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करें, टीवी ना देखें, ईमेल्स और एसएमएस का जवाब बिल्कुल बंद कर दें और अपने बच्चे के साथ समय बिताएं, उसको समझें, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें और कुछ नहीं तो उससे सिर्फ बात करिए, ठीक है? So to conclude this thing, I would just say कि parents are basically the first teachers and the role models to a child. बच्चा दुनिया में आते ही अगर किसी से देखता है या कुछ सीखता है तो वो अपने माँ बाप से सीखता है. They need your love, they need nourishment from you, they need your attention, and apart from that they look up to you for all their troubles and motivation. So just be around them, enjoy their childhood and every phase, be it newborn period, be it infancy, be it toddlerhood or a preschool age, or even adolescents have their own experiences that you would remember later on. Share your experiences, relive your childhood with them, and help them flourish into these beautiful flowers so that they make our earth a better place to live in. Thank you so much. Thank you. So, we have received a few questions from your end. First, I'd like to thank everyone who has asked. We have a question from Madhvi. Madhvi, hello Madhvi. So you have asked, how do we take care of children's health in the pandemic situations? See, pandemic doesn't change your care towards your child. पेंडेमिक आने से एक चीज ये हो गई है कि हमें अपने बच्चों को और अपने आप को, क्योंकि अगर आप बचे रहेंगे इन्फेक्शन से तो आप ये समझिए आपका बच्चा बचा रहेगा इन्फेक्शन से. आपने करना वही है, घर पे रहना है, मास्क पहनना है, कम इंटरेक्शन करना है सोशली, घर का खाना खाना है, एक न्यूट्रिशियस डाइट खानी है जिसमें दाल रोटी सब्जी और वॉट एवर योर कल्चरल दिस थिंग इज. देयर इज नो मैजिकल पिल or no drug which is going to boost your child's immunity. Immunity is basically the result of what we do in total. So see, it's diet, it's exercise, it's good mental environment which gives protection during this pandemic. Everyone is waiting for the vaccine, but that is going to take time. And avoid unnecessary drugs which are there in the market which aim to give protection, right? And that is what you need to do during the pandemic, right? Second question that you have asked, Madhvi, is how does illness affect children's behavior? This is a very nice question, Madhvi. I would just say, how does illness affect your behavior? So, आप क्या करते हैं? You will feel dull. You don't feel like talking to anyone. You don't feel like eating anything. You don't feel like talking to anyone. You just want to take rest. That is how a child is. He may not tell you, but he would stop eating. He would be silent. He would not be playing around. He would just want to lie down or he would just need your lap. So that is the thing, that how illness affects child behavior. But that is the time when you should not be pushy कि हाँ बेटा खा लो, जबरदस्ती नहीं करना है, उसको समझना है, उसको उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. अगर एक साथ नहीं खाना खाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में खिलाना है. अगर सॉलिड्स नहीं खा पा रहा है तो सेमी सॉलिड में है. एज अ पेरेंट वी शुड कीप ट्राइंग. अगर बच्चे को सर्दी है तो सूप्स देने हैं, लूजीज हैं तो पानी ज्यादा पिलाना है, फ्रूट जूसेस नहीं देने हैं, तो और उसको टाइम देना है. हम भी जब बीमार होते हैं वी रिकवर इन अबाउट 4 to 5 days. That is when we start feeling well. तो आप भी जब देखोगे कि जब आपका बेबी रिकवर करने लगेगा, there will be good improvement in appetite. He'll be active. He'll be more responsive. So during this period of illness, what you should do is give frequent meals, give lighter meals, ensure good water intake, and look for any danger signs like बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त है, बिल्कुल सोए जा रहा है, कुछ नहीं खा पी रहा है,
खाट टूट नहीं रहा है, कुछ और अब नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, उल्टियां बंद नहीं हो रही हैं, दस्त बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो देन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड स्पीक टू देम, दे विल हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन, राइट? Then we move on to the next question. What to do for weight gaining of my 6-year-old child? 6-year-old child is an active child. He won't sit at one place. He'll have his own choices. He would ask for junk food like Maggies, burgers, and pasta. So, what you should do is try and divide meals into 3 major portions: breakfast, lunch, dinner. Give 2 snacks. बीच में जो एक स्नैक हो वो फ्रूट स्नैक हो, एक इवनिंग स्नैक में आप पोहा उपमा कुछ भी दे सकते हैं. वेट गेन आप जो पूछ रहे हैं उसके लिए ये देखना जरूरी है कि बच्चे का वेट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. अगर बच्चा एक्टिव है और एक अप्रोप्रिएट रेंज में है, जैसा कि मैंने बताया कि हम जो ग्रोथ चार्ट में देखते हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेट गेन. ओके, एंड इफ द बेबी इज ऑन द लोअर साइड, देन यू नीड टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड. तो आप जैसे रोटी देती हैं तो पराठा दे दीजिए, राइस देती हैं तो उसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए, थोड़ी सब्जियां डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा खाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ देते रहिए और पानी खूब पिलाइए. ठीक है. Then we come down to the next question by Kavita Upreti. So Kavita ji ने पूछा है कि my son is 2.7 month old. What should we do for weight gain? Ma'am, is it 2.7 month old or is it 2.7 years old? 2.7 months is very small because आपका next question है कि his speech is not clear. What can we do for his speech clarity? So I think you're talking about your 2.7-year-old baby. For weight gain, ma'am, again, let us see what the weight is, how he is gaining weight, is he in the normal range? और वही खाने में जो कुछ भी आप देते हैं उसमें एक्स्ट्रा आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ देते रहिए. मुरमुरा हो गया, फ्राइड राइस हो गया, इडली हो गया, ये सारी चीजें हेल्दी भी होती हैं, बच्चे पसंद भी करते हैं एंड उनसे न्यूट्रिटिव वैल्यू भी फूड की बढ़ जाती है. राइट. देन वी हैव सोनाली ठाकुर. शी हैज आस्क्ड, हेलो डॉक्टर, माय बेबी इज 15 month old. हाउ टू improve her immunity? Hello Sonali, thank you for asking this question to me. See, baby's immunity, as I said previously, is a combination of everything. It depends on what sort of diet you are giving. So if you are giving a well-balanced diet, you are giving regular health supplements, you are getting her immunized on time, and you are taking care of the hygienic things, then her immunity is as it is building up. There is no wonder drug which can increase the immunity. Immunity is basically a combination of how our body fights with infection. और इन्फेक्शन से फाइट करने की ताकत कहाँ से आएगी? जो हमारे बॉडी का कॉम्पोजिशन होगा. वो किससे बनता है? जो हम खाते हैं, जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं. These all leads to a good immunity, right? Then Supriya is asking how to prepare my child for surgery and what are the most important years for a child. Supriya, I am not clear about this question, what sort of surgery you are talking. So I would want you to be more specific because different surgeries need different sorts of preparation. So you should please just specify what sort of surgery you are talking about. And what are the most important years for a child? So every phase is important. Your child is a growing, what I should say, as I previously said, is a growing flower. The maximum brain growth happens in the first 2 years of life. So they are attaining their 70-80 potential by 80% of the brain growth by first 2 years. And then subsequently 90% brain growth by the time they are 5 or 6 years. So provide maximum stimulation, give good diet, then every phase has other different importance. A newborn is dependent on you for immunity, breast milk for immunity. Then till 1 year, if you're not introducing food or complementary items at a particular age, then they are at risk of infections.
2 years is the time that they have attained their maximum brain potential. So provide them all the stimulation that you can through your love, affection, through teaching methods, and engage with them. And then as they grow, they have their insecurities about their pubertal changes, insecurities about their education, their peer pressure. So those things are also important. So there is no particular age which is the most important year of a child. But if you want to ask in particular in regards to the brain growth, the first 2 years are the most important period for the brain growth of a child. Lakshmi Mishra ji is asking, my 5-year-old daughter always gets cold and cough in every 3 to 4 months. What can be the reason for this? Ma'am, cough and cold, Lakshmi ji, is the most common presentation in the younger kids. So it's nothing but a viral infection. It would heal on its own. It usually lasts for about 7 to 10 days, and there is nothing or majorly what you can do to prevent is avoid temperature variations. जैसे अगर आप एसी में रहते हैं तो कमरे से निकलने से 10 मिनट पहले एसी बंद कर दें और फिर बच्चे को बाहर निकालिए. ठीक है, बच्चा जब खेल के आता है और उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस टाइम पे उसको तुरंत पानी ना दें. उससे क्या होता है कि जो हम सर्द गर्म वाली बात कहते हैं वो सूजन पड़ जाती है, तो वो ना करें. ठीक है, 5 या 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी दें. और तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि उससे कहें कि हैंड वॉशिंग जो आज का गुरु मंत्र है वो फ्रीक्वेंटली करें कोई भी काम करने के बाद, क्योंकि जो सोर्स होती है वायरस की वो या तो हवा में है. हवा में जो चीज है वो तो भाई मास्क से ही रुक सकती है जो हम आजकल यूज कर रहे हैं. दूसरा होता है कि जो हम बार बार छू के चीजें यहाँ हाथ लगाते हैं या मुंह पे हाथ लगाते हैं तो वहां से हम इन्फेक्शन पकड़ते हैं. बट शी इज अ यंग चाइल्ड एंड आई एम श्योर शी विल आउटग्रो इट by the time she is 7 or 8 years of age, right? Then you are saying that your daughter is complaining of hello yeah, sorry. So coming down to your question, Lakshmi ji, my daughter is also complaining of leg pain and any diet you need to follow. So hello yeah, so leg pains. Yes. We need to end it, huh? Yeah. Nana, just 2 minutes. The last question that I'm answering now. Right, the last one. Right. So, see, leg pain is very common in growing children. This is what we call as growth pains. But this is usually in the night because an active child, when sleeps, they say that मम्मी पैर में दर्द हो रहा है. तो कुछ नहीं करना है, जेंटली सोते वक्त मसाज करिए, विटामिन डी दीजिए, पानी खूब पिलाइए और अपना जो है अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि दिस इज समथिंग सीरियस देन कम टू अ डॉक्टर एंड टेक अ एडवाइस, राइट? सो आई विल बी एंडिंग माय सेशन नाउ and thank you all for your active participation. Hope to meet you soon. Thank you so much. Signing off. Bye. Namaskar.